गुस्से वाले को अगर, क्योंकि वो स्ट्रेस में होता है तभी गुस्सा होता है। और मुझे लगता है लव केयर, अफेक्शन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, ये तमाम चीजें हैं जिनसे आप अपने नियर एंड डियर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ज़्यादा बीमार जी। होगा तो आएगा ही नहीं आपके पास। जो कम बीमार होगा वो ये समझ लेगा कि मुझे यहाँ ले जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं आएगा। समस्याएं विकट हैं, इसके बारे में हमें कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे। कि जिस ये है कि ये हमें पागल शब्द ही डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा, पागल खाना वर्ड भी हटाना पड़ेगा। हम तो इसको स्ट्रेस कहेंगे, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है। और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर हम इसकी मार्केटिंग करें तो मेरे ख्याल से ये हाँ संभव। जी। राकेश कर्णवाल, MBBS MD मेडिसिन, आपका महाभारती सभा में पुनः स्वागत है। आप बहुत ही कठिन विषयों को बहुत सरलता से दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सीजोफ्रीनिया के बारे में। सीजोफ्रीनिया को दिमागी कैंसर भी कहा जाता है और लगभग 115 साल पुराना ये टर्म है। और मेरे संज्ञान में अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं इवॉल्व हो पाई है। वैसे तो कहा जाता है कि दिमाग में जो केमिकल अनबैलेंसेस होते हैं, और 4 तरह के केमिकल्स की चर्चा अभी मैंने सुनी है, मगर मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, नहीं इजाद हो पाई है जिसकी वजह से एग्जैक्ट इम्पैक्ट किस केमिकल की वजह से क्या होता है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राकेश कर्णवाल इस बारे में हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। एक शब्द, एक लाइन ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वैसे जिनका जिद्दी स्वभाव होता है, जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जिनको ईगो की प्रॉब्लम होती है, समानतः कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो जनसाधारण में होता है। मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि किसी को सिम्टम्स के आधार पर ही मेंटल पेशेंट के कह देना, मुझे लगता है ये गाली के समान ही है। और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए किसी की डिग्निटी को चैलेंज करने से पहले। तो ओवर टू डॉक्टर कर्ण। हाँ जी। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। So my Jai Hind and Namaskar to all the participants and the viewers who are watching this video. First of all, I would like to thank Mr. Sinha to have given me the opportunity of sharing this platform of Mahabharati. And I'll not waste time on introduction, but I will switch over directly to the topic of today, which is a psychiatric disorder called schizophrenia, which comes under abnormal psychology. So let's start with the definition. See, schizophrenia is defined as the perceptions, thoughts, persons, thoughts, perceptions, emotions, and behaviors are impaired to the point where he is not able to function normally in life. The patient remains disconnected from the world in which most of us lives. It appears earlier for men than for women, and the incidence is significantly higher in males as compared to the females.
So the male and female ratio is 1.4:1. So the prevalence in India, the prevalence of schizophrenia is 0.3%. And as per the WHO statistics worldwide, the prevalence is 0.32%, and it is 0.45% amongst the adults. Just taking certain countries into consideration, Finland has an prevalence of 0.87%, while Canada has a prevalence of 1%, and USA tops it all by having a prevalence of 1.2%. So let's discuss the clinical symptoms, which have been divided into positive symptoms and negative symptoms. See, the positive symptoms are the presence of too much of a behavior that is not apparent in most people, while negative symptoms is the absence of a behavior that should be evident in more people. So let's come down to the symptoms. See, the first symptom is hallucinations. The second one is delusions. The third is disorganized thoughts. The fourth is disorganized behavior. And the last is negative symptoms. So we'll have to, discuss each of these symptoms one by one. But before that, I'll jump to the diagnostic criteria of schizophrenia, because the symptoms are still fresh in your minds. So we can go in for the diagnostic criteria. So this is known as Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses, which is called DSM, Chapter 5. This is the latest modification of this manual, which says that two or more of the following, each present for a significant portion of time during a 1 month period, or less if successfully treatment. So out of these 5 symptoms, we need to have at least 2 or more symptoms before we diagnose the case as a case of schizophrenia. There's a further clarification that at least one of these symptoms must be either hallucinations or delusions or disorganized speech. It's not a must that we just have one or one of them. All 3 of these can be there in the patient, but the criteria is 2 or more of the following. So fourth one is disorganized or catatonic behavior. And the last is negative symptoms, which I've just shown you. So let's go to the, what you call as, there are other criteria also, which I'm not going to discuss because they will be beyond, the jurisdiction of layman. So basically, there have to be continuous signs of the disturbance for a period of at least 6 months. So that is one more criteria. And there are other criteria also. I'd not like to go into those in details. So let's go to the description of all what you call as symptoms. So first was hallucinations. So hallucinations are things that appear real to the person experiencing them, but are actually just perceptions created by the mind.
and they occur while a patient is awake. Then there are certain types of hallucinations. I'm not going to cover all of them, but I'll just make a mention of only a few of them, the important ones. First is auditory hallucinations, that is, hearing things. The second one is visual hallucinations, that is, seeing things which are not there. The third is olfactory hallucinations, that is, people smell certain odors which are not present actually. And the fourth one is tactile hallucinations, that is, presence of something over the body or inside the body. So starting with these, let me discuss these four types of hallucinations in slightly more detail. I think this got hung up. So the next one, first is auditory hallucinations, which means hearing voices or noises that don't exist in reality. See, some people with schizophrenia hear their own thoughts spoken by another voice. Some people claim that they hear voices arguing amongst themselves. Or, some people may hear voices which they are commenting on their behavior. So this is one of those diagrammatic representations of auditory hallucinations. This is also a depiction of auditory hallucinations. And you can see the third depiction of auditory hallucinations where there's a voice speaking, in the ears of a girl. So let us jump over to visual hallucinations. See, auditory hallucinations, as I said, hearing voices or noises that don't exist in reality. There are some people with schizophrenia, they hear their own thoughts spoken by another voice. Some people claim that they hear voices arguing amongst themselves. And some people hear voices commenting on their behavior. I've already shown you all that. So visual hallucinations will come to the visual hallucinations. That is what we see. So visual hallucinations means seeing images when there is nothing in the environment to account for it. Like seeing things that are not there. And they can be of two types. Simple, that is, seeing flashes or geometric shapes, or complex faces, animals, or scenes. They may see ghosts, they may see dead people. And visual hallucination is less common as compared to the auditory hallucination. So these are the picture depictions of visual hallucinations. Now, coming to the olfactory hallucinations, these olfactory hallucinations are also known as phantasmia. They make you detect smells that are really there in your environment. See, the odors can be different from person to person, maybe foul or pleasant, or these smells may seem to always be there, or it may come and go. So the depiction of olfactory hallucinations is the second is, when the person, smells the aroma of the cigarettes while nobody is smoking in the house.
Or let us go to the tactile hallucinations, the sensations of touch without any physical stimulus. And some people may experience sensations of touch or movement on the skin or within the body itself. It's like, we'll just give you certain examples. Certain people think that snakes or bugs are crawling under the skin or on the body, or the sensation of being kissed, having sex, feeling as if internal organs are moving, or itching or burnings. I think one of the speakers may kindly mute the voice because there's a disturbance in the background. So tactile hallucinations, as I said, you can see that the person feels as if there are a lot of bugs or ants on the hands, or there are bugs, which are moving on his face, or there's sensation of intense itching all over the body. So we go back to the delusions now. What are delusions? See, delusions are beliefs that are clearly absurd and contrary to reality, and are firmly held even in the face of contradictory evidence. This is found among 65 to 74% of the people with schizophrenia. Most of the studies have given the incidence as 65%, but there are a couple of studies which are given from 71 to 74. So I've taken the range of 65 to 74% of the people of schizophrenia have delusions, tactile delusions. So let us come to the types of delusions. You need not remember these technical names of these delusions. It's basically, it would be beneficial that you remember only the symptoms or the description of the various types of delusions. So first is paranoid delusion, which involves the false belief that other people or agencies are plotting to harm the person. Grandiose delusions, which is beliefs that one holds special power, unique knowledge, or is extremely important. Thought withdrawal, that is, the belief that one's thoughts are being removed from one's mind by other people or force. Then the opposite of that is thought insertion. That is a delusion that one's thoughts is not one's own but inserted into the mind by an external source of or entity. Then the next one is thought broadcasting. There's a delusion that one's thought is being projected and perceived by others. So the person feels that whatever he's thinking is being broadcasted, and people around, all around, they can hear the thoughts and understand them. So the other ones, I'm talking of the types of delusions, is somatic delusion, which is the belief that something highly abnormal is happening to one's body. Say, for example, the person feels that one's kidneys are being eaten by the cockroaches. And delusion of jealousy is the unsubstantiated belief that the partner is unfaithful. Then the next type of delusion is ideas of reference, which means that the false belief that everything occurring around them is related somehow to them, when the fact is that it isn't. So I'll give you the diagrammatic representation, pictures representation of each of these delusions.
You can see the paranoid delusions. The second one is that this gentleman is fully scared that there are a lot of people outside who are coming to harm him. So he's hiding in his house and watching people approaching towards his house. Another paranoid discussion that people are there who are going to kill him. So he sleeps with his revolver in his hand, and most of the time he remains awake, fearing that somebody is going to enter the house and will harm him. As far as the delusions of grandiosity is concerned, the person feels that he is unusually strong. He has the strength of the Atlas. As you remember, Atlas is the god who is supposed to hold the entire earth on his back. So he has this false sense of grandiosity. Then a lean and thin person, he thinks he's the strongest person in the world. A cat, while watching her own image, imagines that she is a tiger and not a cat. Delusions of grandiosity, again, is represented by a lady who considers herself to be a queen or a princess, holding tremendous powers and can do anything for the country. So delusions of grandiosity again shows that a person is trying to, push a big boulder uphill. So this is what his perception is, that he's very strong. And thought insertion is, when the other's thoughts, the person feels that others' thoughts are being inserted into his mind. Then comes thought broadcasting, as I said, that the person has this delusion that all his thoughts are being broadcasted and they are being heard by people around him and they are perceiving them and they know what exactly he is thinking. Again, a representation of thought broadcasting. We spoke about somatic delusions, where the person believes that, the doctor has removed a part of his intestine and is trying to tell the other person or his friend that, look, my intestine has been removed by the doctor, while there is no, in reality, there is not even a scar over his abdomen. So, what is the ideas of reference? See, the ideas of reference we have already spoken about. That the belief held by some patients that everything occurring around them is related somehow to them, when in fact it isn't. Say, for example, I'll give you some certain examples. Somebody is walking into the party or market, may believe that everyone is looking at them, or someone is walking through a crowded shopping area, may hear two people laughing and assume that they are laughing at them. So this is a representation of ideas of reference, where two people are talking to each other while the patient, is perceiving it as if they are discussing him. Same is the case in this picture, where you can see two people who are whispering to each other, and the third person, that is the patient, he infers that they are discussing him, or they're criticizing or making fun of his looks or his attitude. So coming to the next type of delusion is persecutory delusions. See, people with this type of delusions,
disorder believe that someone or something is mistreating, spying on, or attempting to harm them, or someone close to them. Or the people of this type of delusion disorder may make repeated complaints to the legal authorities that so and so is, out to harm him. And this is found in almost 65% of the cases of schizophrenia. So the next symptom is disorganized thoughts. So we have discussed so far delusions, hallucinations, two main symptoms. The third main symptom is disorganized thoughts, which refers to an inability to form coherent or logical thoughts. And this leads to disorganized speech. So the speech is disorganized and difficult for a listener to follow. The patient may speak incoherently, stringing together similar sounding words, and may even invent new words. And this is often accompanied by silliness or laughter. So they respond to questions with unrelated answers. You ask the person, what is your name? And he'll say, my head is a cauliflower. So if, say, for example, the management of a company ask one of the employees, that is the patient, that they would like to send him for a training. The person, connects this training with the train, and he says, yes, just a few days back, I'd gone to Lucknow by train. So this is how they perceive, their speech is disorganized and the thoughts are jumbled up. Then they will say illogical things. And lastly, they rapidly shift between topics with no connections between these topics. Say, for example, so I was going to the market and there was a river. And I fell into the river, came into the jungle. Then I reached the market and wanted to purchase apples. So this sort of disorganized, topics, he jumps from one topic to another, which have no connection between them. So the next symptom is disorganized or abnormal behavior. And this refers to unusual behaviors and movements. These patients show decreased reactivity to the environment. So they are not reactive to the environment. So the common ones, I'll try to further elaborate upon these disorganized and abnormal behaviors by giving you examples. They can become unusually active. They may exhibit childlike behaviors, like giggling and smiling for no reason, or they may be talking to themselves. The patient may engage in repeated and purposeless movements, like, say, for example, he keeps on moving his hand this way for no rhyme or reason. They may display odd facial expressions and gestures. They may exhibit emotions that is inappropriate to the situation, such as laughing at something sad. Say, for example, he has been told that his mother is expired and he starts laughing. So this is an inappropriate emotion which he is displaying. And at times, when he's absolutely dissociated from the world,
is living in. He may even urinate in public or gesture repeatedly using peculiar and sometimes complex sequences of fingers, hands, and arms. On the other hand, he may show decreased reactivity to the environment, such as posturing. Posturing simply means in which the person maintains a rigid and bizarre posture for long periods of time. Or even there's a term called catatonic stupor, which is a complete lack of movement and verbal behavior. I'm going to show these representations diagrammatically or through the aid of the images. See, these are the common catatonic behaviors like rigidity or stupor that lasts for hours or even days. The performing strange movements, staying in uncomfortable positions without shifting, or they are erratic and extreme movements. Then they may also keep on repeating the same word again and again, which is known as echolalia. So you can see this picture where this lady has kept her lower limb, one of the lower limbs, held up in the air, and this will continue for hours together. And if a person does want to change the position, he can change the position, any other person. But whatever the position, the new position is, the patient will continue to maintain that second position. Or you can see that this lady, old lady, is standing absolutely with this fixed posture, and this may last for hours also. So coming to the negative symptoms, that is last symptom of the this main talking of this one, schizophrenia. So negative symptoms are deficiency of behavior. We have just spoken about deficiency of behavior. So the first one is evolution. You need not remember these technical names. Evolution simply is defined as decreased motivation to achieve goals in different contexts, whether it's social, academic, or work. Say, for example, person has difficulty starting projects and completing tasks given at work or in school. They feel uninterested in your work or social activities. They do not pay their bills in time. They miss the deadlines, or they feel detached and uninterested in their relationships. So the next one is called elogia. This is known as poverty of speech. That is, he speaks very less. The patient speaks very less, and he speaks less often, uses fewer words, and may take long to talk or are less likely to talk unless someone talks to you first. Say, for example, when you ask the person, okay, what's your name? You'll simply say, Ramesh. So, which part of the country do you belong? Tamil Nadu. So you just use monosyllables, or he may not answer at all. Or he may, when he is confronted with a couple of friends, he will not start with a conversation. And he just starts only conversation when somebody asks him to, something. So next is, I think, anhedonia, what we call is. It is a lack of interest in enjoyment of pleasures. So the patient may not want to spend time with others or do activities that previously made him happy.
Say, for example, he used to enjoy listening to music, eating different types of foods, or having sex. So now, when he develops these negative symptoms, that is anhedonia, he does not, take any interest in the things or hobbies which he used to enjoy earlier. The next one is flat effect. So flat effect is when you feel emotions but show practically nothing visually. So there are other types of effects which are related to flat effect. Something like labile effect, that refers to sudden shifts in how you express emotions. One moment the person is laughing, and the other moment he becomes violent. So the second one is inappropriate effect. This is when an emotional reaction doesn't seem to fit to the situation. As I just said, that he starts smiling when he hears that somebody has died. So there's another one, which is something akin to the flat effect, that is blunted effect, which refers to feeling emotions, but only showing some of what they are feeling. So they don't show their emotions completely, but they do show little amount of it. Then asociality. So asociality is, the person is antisocial, or you can say you call him as, as introvert. He has very few friends. He doesn't like to socialize. So he has very poor social skills and has little interest in being with others. So I'd like to show you these negative symptoms through the medium of certain images. See, this is the flat effect. If you see these 6 images of the same lady, the face is absolutely blunt without any emotions. Even if the patient is either stressed, is sad, she is contented, she is happy, she is anxious, or she is surprised, but doesn't show any emotions externally to others. So this is known as flat effect, or we can say mask-like effect. So coming to the causes of schizophrenia. So, see, studies have, the first cause is genes. See, studies have demonstrated that genetic factors contribute to schizophrenia to a limited extent only. And secondly, more important that is, that the disorder most likely arises from a combination of genetic and environmental factors rather than just genes themselves. And so the second is neurotransmitters. We are talking about neurotransmitters, that is the chemicals. See, these chemicals, substances are which are released at the end of a nerve fiber. When a nerve impulse arrives at the junction. And this release of a chemical substance facilitates transmission of the nerve impulse from one nerve to another one. So this is what is known as a neurotransmitter. And there are several hypotheses that dopamine is one of the neurotransmitters. So they say that it's been seen that overabundance of dopamine or too many dopamine receptors. I'll give you an example of this dopamine. Say, for example, you have a very vast field for yourself, which is adjacent to a canal. The canal,
gives water for you to grow the crop. So overabundance of dopamine is the factor which causes schizophrenia, or there may be too many dopamine receptors. Just before going for a break, I was giving you an analogy that, you may imagine that you've got a big farm next to the canal, and you have a gate over there, floodgate. So whenever you open the floodgate, the water from the canal comes into the field, which is just adequate amount of water that comes. But suppose you have 6 or 7 floodgates and you open them all of a sudden, the field will be flooded with water, which is going to be destructive. So you can say, you can compare those floodgates with the dopamine receptors. So the more the receptors, that is more the gates, the more water is going to come in. So if there are too many dopamine receptors, so more of dopamine, that is the neurotransmitter, will be, collecting over there, which will be more than required. And this will produce the features of schizophrenia. So there are abnormalities in dopamine which vary by brain region also. It has been seen that an overabundance of dopamine in a part of the brain which is known as limbic system, this is responsible for hallucinations and delusions. Whereas low levels of dopamine in the frontal cortex, this is the frontal cortex, in front of the brain. I can't see my video over here. You are visible, sir. Achha, I'm visible. Oh, thank you. Because it is not coming on my screen. It is coming, sir. So, okay. So the low levels of dopamine in the frontal cortex are responsible for negative symptoms. And apart from this, there's another transmitter called serotonin, which also plays a crucial role in the development of schizophrenia. So these newer antipsychotic medications which are used to treat the disorder, they work by blocking these serotonin receptors. So to summarize, there are 2 neurotransmitters, that is chemical substances called dopamine and serotonin, which are mainly responsible for the development of schizophrenia. And the next one is the brain anatomy. See, in the brain, it's been seen when MRI was carried out in all these cases of schizophrenia. They saw that there's enlarged ventricles. I'll show you the pictures so that you'll be able to understand better. Let me go to the picture first and show you. I think it's got hung. इस स्लाइड को आप फुल स्क्रीन पे ला सकते हैं, नीचे जो हाँ जी, यस इसको अच्छा ठीक है, ओके, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा इसी से. हाँ यस राइट, तो क्लिक कर दीजिए. ओके. हाँ यस नाउ So इट्स if we see, यस. हाँ जी, now I think the slide is covering the whole screen. Yes, sir. So what I was trying to tell you is that whenever the ventricles enlarge, these are in the center of the brain. So it pushes the brain matter, the gray matter. But since the brain is within a solid structure, what is known as skull, so there is no space for the brain to expand, and accordingly. So what happens is there's pressure over the brain parts, the affected parts of the brain, which
again leads to deficiency of the functions which that part of the brain is responsible for. So it has been seen that the frontal lobes are important in the variety of complex cognitive functions such as planning and executing behavior, attention, speech, movement, and problem solving. So let me see, the next one comes. Yes, this is the diagram of the ventricles. You can see in the first picture that there's something like a candle stand, which is known as the ventricle. It's in the center of the two hemispheres of the brain, which is very narrow. But in the second one, you can see that these ventricles are grossly dilated and they're compressing upon the gray matter of the brain. If you see it in the MRI, it's exactly the same what you have just seen in the picture. So the next cause is events taking place during pregnancy. See, high risk of developing schizophrenia, environmental factors impacting normal brain development. So there are a lot of, obstetric cases which, lead to abnormalities of brain development. Something like obstetric complications in the births of children. Then important factor which comes into play is mother's exposure to influenza during the first 3 months of pregnancy. So this has also been an important observation that the mother in the first 3 months of pregnancy, if she contracts influenza, the offsprings, the child is likely to develop or may have higher risk of developing schizophrenia. Then the third one is mother's emotional stress during pregnancy. So if the mother remains, emotionally stressed throughout the pregnancy, that also affects a normal development of the brain. And again, there'll be a high risk of developing schizophrenia in the child. So mothers who experience the death of a relative during the first trimester. So this is again a cause of severe emotional stress. And as you know, it's within first 3 months, the entire development of fetus takes place. So anything happening in those first 3 months are likely to, cause development, of the brain's complications. It'll affect the development of the brain. So depending on which part of the brain is affected, person may have paralysis, the child may have, different type of abnormalities, congenital abnormalities, what we call this. Then the next is the overuse or abuse of marijuana. So marijuana use is a risk factor for schizophrenia. It's been seen that the use of marijuana 50 or more times was 6 times as likely to develop schizophrenia as compared to those who have never taken or used marijuana. So use of marijuana is associated with the onset of psychotic disorders such as schizophrenia at an earlier age. And early marijuana use may disrupt normal brain development. See, the brain continues to develop till adolescence, beginning of adolescence, or puberty, you can say. So important early maturation periods that we are calling off. But at the same time, this has not been, confirmed because
It may be the other way around. Say, schizophrenic people, they may get used to marijuana and vice versa. So, use of marijuana has not been proven conclusively. So, before concluding, I would like to quote that no one has schizophrenia, like having a cold. The patient has not got schizophrenia. They do not contact schizophrenia. The patient is schizophrenic. So, for this reason, schizophrenia and other psychotic disorders and other mental health disorders, they need more of awareness because amongst the general public, the government and the NGOs and the concerned hospitals, they have to, improve upon their facilities to diagnose such cases and treat them accordingly. So this should be on top priority of all these concerned organizations. So in other words, we should say that mental health does matter. And yes, of course, as Awadi says, that schizophrenia and other psychotic disorders, they have to be, broadcast publicly over either in the form of newspapers, TVs, so that we increase the awareness of psychotic disorders amongst the general public. And thank you. कुछ ये है कि ये हमें पागल शब्द ही डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा, पागल खाना वर्ड भी हटाना पड़ेगा। हम तो इसको स्ट्रेस कहेंगे, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर हम इसकी मार्केटिंग करें तो मेरे ख्याल से ये संभव। For giving a patient hearing, if you have any questions, you're most welcome to ask. Dr. Saab, thank you very much for your technical and medical awareness to our viewers. सब थैंक यू वेरी मच। अब हम कुछ जल्दी जल्दी अपने व्यूअर्स के अवेयरनेस के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जब लास्ट में आप बात कर रहे थे मौरी जुआना है, ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है हमारे कुछ साथियों को भी ना समझ में आए, तो इसके बारे में ये वो स्टिमुलेंट्स हैं, सेरेब्रल स्टिमुलेंट्स लाइक ओपियम वगैरह, गांजा है, सल्फा है, यही चीजें, इनको मैरिजुआना इज वन ऑफ देम ओनली। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, दे आर नोन एज साइकोस्टिमुलेंट्स बेसिकली। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो एमआरआई का जो आप बता रहे थे कि साहब ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है और वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लगा हमें। तो ये जो चार टाइप के केमिकल एम्बुलेंस हैं उनका अलग अलग एनालिसिस कर देता है इस तरह का एमआरआई, या कैसे होता है, क्या है इस बारे में? नहीं, एमआरआई तो सिर्फ एक कंट्रीब्यूटरी एविडेंस है। ओके। ये एक स्टडीज हुई हैं, तो उन स्टडीज में जितने भी लोग स्किज़ोफ्रेनिक निकले हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स का एमआरआई कोरिलेशन भी किया गया है। और इसमें ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आई है वो कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें डायलेटेड हैं। पर ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ और भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ये वेंट्रिकल्स डायलेट होते हैं, और भी कंडीशंस हैं जहाँ की हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड जो है, दिस इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर वो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रेन में भी वो डायलेट हो जाएंगे। तो सो जो फ्लूइड का प्रेशर है या फ्लूइड का कितना इम्बैलेंस है, इसको मेजर करने का अभी तक कोई इक्विपमेंट नहीं है।
नहीं, वो डायरेक्टली तो नहीं है। एक तो यही एमआरआई से ही मालूम हो जाता है कि प्रेशर काफी है। सेकंड है, अगर हम ये जो लोअर बैक जिसको हम लंबर रीजन कहते हैं वहां पे अगर हम नीडल डालेंगे, बिकॉज आई सेड कि ना कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, सो ये स्पाइन से लेके सीधा ब्रेन तक ये फ्लूइड फैला हुआ होता है, एक ही चैनल है। तो पूरे चैनल में ये प्रेशर तो इंक्रीज रहेगा। तो वहां से अगर नीडल डाल के उसको हम मैनोमीटर में लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो मैनोमीटर से पता चल जाएगा कि प्रेशर ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि पहले कुत्ता काट लेता था तो लोग इंजेक्शन की बात करते थे कि आप पागल हो जाओगे या कुत्ता मर जाएगा। तो क्या ये जो मेंटल डिसऑर्डर हैं कुत्ते के काटने से भी होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसको हम रेबीज बोलते हैं। और रेबीज में बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो जाते हैं शुरू, उसमें पूरी बॉडी स्टिफ भी हो जाती है, और स्टिफनेस के अलावा बॉडी में शेक भी करने लगती है, और उसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, डिसोरिएंटेड हो जाता है पेशेंट, और उसको समटाइम्स हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, विजुअल है, ऑडिटरी, बेसिकली हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। और ये तो अनट्रीटेबल केस है। एक बार रेबीज हो गई तो उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। सो इसीलिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन जो कि यूज करते हैं, पर ये नहीं कि हम सबको दे सकते हैं, देते हैं। ये इट्स नॉट साइंटिफिक। अब हजारों में से एक दो लोगों को कुत्ता काटता है, सो व्हाट वी डू इज द पर्सन शुड आइडियली हु हैज हैड अ डॉग बाइट, स्पेशली बाय अ वाइल्ड डॉग, स्ट्रीट डॉग, जिसकी कि हमें कोई पता नहीं है, और वो भी जो कि पेट डॉग्स, अगर बाइट है, पेट डॉग्स से बाइट हो रहा है, उनको भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उनमें पहला इंजेक्शन देते हैं फर्स्ट डे, दैट इज नोन एज डे 0। सेकंड देते हैं थर्ड डे पर, जबकि हमें उनका रेबीज स्टेटस नहीं पता है। हम टॉकिंग ऑफ द द कल्प्रेट डॉग। थर्ड देते हैं सेवेंथ डे पर, डे 7 व्हाट इज नोन एज, बिकॉज अगर कुत्ते को रेबीज है तो द डॉग विल डाई विद इन 10 days टाइम। सो दिस इज कंफर्म। अब काटने के समय पर कितने दिन पहले से उसको रेबीज हुआ है और कितने दिन, 10 दिन होने में बचे हैं, ये डिपेंड करता है। बट आइडियल इज कि अगर हम उस डॉग को, ये दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट, कि अगर वो डॉग को पहचानते हैं तो उसके ऊपर में ऑब्जर्वेशन जरूर रखें, स्पेशली द पेट डॉग। पर अगर स्ट्रीट डॉग्स में भी उसको पहचान लेते हैं, कीप एन आई ऑन देम। तो जब उसका जो फोर्थ इंजेक्शन का टाइम आता है, दैट इज ऑन डे 10, आई एम टॉकिंग ऑफ डे 14, नॉट 10, डे 14, चौथे इंजेक्शन का। तो अगर वो उसने, पेशेंट ने डॉग के ऊपर में नजर रखी है और वो उसको कहता है कि अभी तक डॉग मर गया, तो हमें 14th को भी, 28th डे को भी, और उसके बाद में 90th डे भी पूरा उसको डोज देनी होती है। पर अगर वो डॉग जिंदा है तो इसका मतलब है उसको रेबीज नहीं था। तो हम तीसरे के बाद में जो फोर्थ डोज जो ड्यू होती है डे 14 को, फिर उसके आगे नहीं लगाते, फोर्थ फोर्थ डोज भी नहीं देता, तो 3 डोज ही में हम उसको बंद कर देते हैं, assuming that the patient will not suffer from rabies. और डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जो आपने अपना व्याख्यान दिया उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सिम्टम्स हैं, और ये जो सीजोफ्रीनिया है ये तो सबसे सीवियर स्टेज है। मेंटल डिसऑर्डर की तमाम स्टेजेस हैं,
में कोई इसका साइंटिफिक टूल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एविडेंस के आधार पर ही चीज़ें जानी जा सकती हैं। अब इसमें मुश्किल ये है कि डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं रहता है, और पेशेंट्स को लाने वाले जिस तरह का नरेटिव देते हैं उस तरह की मेडिकेशन जनरली होती है। इस पर रोकथाम या इस पर क्वालिटी मेडिकेशन या क्वालिटी ट्रीटमेंट या क्वालिटी एनालिसिस कैसे अश्योर हो, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करिए। हाँ जी, जी हाँ। देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं इसमें। जैसे मैंने कि पहले बताया था आपको डीएनएस चैप्टर 5 का क्राइटेरिया डायग्नोसिस के ऊपर कि हाउ टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो मोटा मोटा हमने उसमें बताया था कि जो 3 सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स, उसमें से कम एक होना जरूरी है, और जो 5 सिम्टम्स हैं टोटल, उसमें से मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा होना जरूरी है। तो उससे हमें डायग्नोसिस तो पता चल जाती है। पर अब उस स्किज़ोफ्रेनिया की सिवियरिटी कितनी है, ये इसको मालूम करने के लिए एक और एक स्केल है, पूरा स्कोरिंग स्केल है, what is known as positive and negative syndrome scale, which is known as, PANS, PANSS 30। 30 का मतलब है कि this is a rating scale which is used to assess symptoms of schizophrenia, और इसमें 30 आइटम्स होते हैं। 30 आइटम्स का मतलब वो 30 पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। हमने 5 मेन सिम्टम्स बात की थी, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो सिम्टम्स, सब टाइप्स, और इसी तरीके से हमने नेगेटिव सिम्टम्स भी डिस्कस किए थे, कितनी तरह के होते हैं। तो उन्हीं में से मेन जो 30 हैं आइटम्स हैं, उनको लेकर ये पैंस सिंड्रोम स्केल बनाया गया है। सो अब ये जो स्केल होता है, ये हमने इसको सब डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स व्हाट वी कैन कॉल एज। तो एक तो पॉजिटिव सिंड्रोम स्केल है, जो पॉजिटिव सिम्टम्स सब स्केल्स को कहते हैं, उसमें 7 आइटम्स होते हैं। जो नेगेटिव सब स्केल होता है, उसमें भी 7 आइटम्स होते हैं। और एक तीसरा होता है जनरल साइकोपैथोलॉजी सब स्केल, जिसमें कि 16 आइटम्स होते हैं। तो कुल मिला के 30 आइटम्स हो गए। और हर सब स्केल यानी कि हर आइटम फिर से रेट किया जाता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 7 points, which is based on the severity of symptoms, and the range is from absent to extreme. Now अगर मैं इन 7 की बात करूंगा, जो 7 पॉइंट जिसके ऊपर में हम करते हैं, तो उसमें होता है कि जब उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसको हम एब्सेंट बोलते हैं, विच इज स्केल 1। So we assign 1 point to the person who doesn't have any symptoms. जिसमें मिनिमल सिम्टम्स होते हैं, उसको हम असाइन करते हैं 2 पॉइंट्स। थर्ड है माइल्ड, उसको 3 पॉइंट्स, मॉडरेट को 4 पॉइंट्स, मॉडरेट सिवियर को 5 पॉइंट्स, सिवियर को 6 पॉइंट्स, और एक्सट्रीम को 7 पॉइंट्स। तो ये 1 से 7 तक हो गए। तो जिसको भी 7 पॉइंट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली उसको तो नहीं होगा, क्योंकि 1 पॉइंट जो है वो एब्सेंट है। तो अभी ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जितने भी हमने पॉइंट्स, जो रेटिंग सिस्टम में जो पॉइंट्स हमने बात की है, जो एब्सेंट, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट सिवियर, सिवियर, एक्सट्रीम, इसमें भी हर पॉइंट के लिए सर्टन पैटर्न्स, वो सर्टन उसमें भी पैरामीटर्स दिए गए हैं। जब तक कि वो सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स दिए गए फुलफिल नहीं करता है, तब तक हम उसको वो पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है ना, उसका इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं दे सकते। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि मॉडरेट है, मॉडरेट में 5 पैरामीटर्स दिए हैं, जबकि वो फुलफिल करेगा, जब पांचों की पांचों फुलफिल करेगा,
तब उसको वो 4 पॉइंट दिए जाएंगे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि 5 के अलावा उसके पास में एक और सिम्टम है, दैट इज जो 4 की जगह जो 5 वाला है मॉडरेट सिवियर में, हमें 5 पैरामीटर्स और चाहिए, पर उन 5 पैरामीटर्स में से उसको एक पैरामीटर और भी है, उसमें से एक ही पैरामीटर है, सो दैट मीन्स उसको फिर भी हम 5 पॉइंट्स अलॉट करते हैं। तो इस प्रकार जो अगर आप देखेंगे तो जो रेंज हो जाती है, जो पॉजिटिव स्केल की रेंज होगी, 7 है आइटम्स हैं और हर आइटम के 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 से लेके 49 पॉइंट्स तक का उसका स्केल होता है। नेगेटिव का भी यही है। और जनरल जो साइकोपैथोलॉजी स्केल है उसमें 16 आइटम्स होते हैं, तो मिनिमम इज 16 और दिस कैन रेंज अप टू 112, दैट इज 112 इज द मैक्सिमम। जैसे मैंने कहा था कि 16 को 7 से गुणा करेंगे, 7 इज द मैक्सिमम पॉइंट्स, तो 16 इंटू 7 कम्स टू 112। तो ये सबको हम कंबाइन करते हैं टू फाइंड आउट द अल्टीमेट उसका जो सिवियरिटी है। सो इन अदर वर्ड्स 30 अगर है, सम जो है 30 है, दैट मीन द पेशेंट इज नॉर्मल, बिकॉज एक एक पॉइंट तो वाज एब्सेंट। तो 30 उसमें आइटम्स हैं, तो सब में 30 में एक एक मिलेगा, तो दैट मीन्स ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। सो मोर देन 30 अप टू 112, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा सिवियर होगा। एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड। नाउ देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स। तो इसको जो हमें ना ऑब्जेक्टिवली जो असेस करते हैं, जो भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो असेस करता है, ही कैन मेक अ मिस्टेक। ही कैन मेक अ मिस्टेक कि एक सिम्टम को जो पेशेंट से पता चला उसको उसने कंस्टिट्यूट किया कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है या रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। सो वी नीड अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट टू assess the severity of schizophrenia, with the help of PANS, what is positive and negative syndrome scale. तो इस तरह से हम कहेंगे कि psychologists are much more comprehensive in reaching to an exact degree or severity of schizophrenia. Now, the only difference between psychologists और हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनमें 2 चीजों का डिफरेंस है। जो मेन है कि साइकोलॉजिस्ट जो है दे रिलाई मोर ऑन ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल पैंस 30 है, उस पर रिलाई करते हैं, और इट्स अ वेरी थॉरो ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर। अब पैथोलॉजिस्ट का, सॉरी, साइकेट्रिस्ट इतना टाइम नहीं दे पाता है। उसने तो देखा, जो मैंने बताया था DNS-5 स्केल, जो उससे कि पॉजिटिव है उसकी दवाइयां शुरू कर दो, जो जो उसके पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो दवाइयां शुरू कर दो। बट this one I'm talking to the psychologists, they see everything and they see which symptom is more severe. तो वो क्या करते हैं कि दे सब्जेक्ट द पेशेंट टू साइकोथेरेपी, जो कि हमने लास्ट टाइम एक किसी वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. So after some, it depends, varies from person, psychologist to psychologist. So some of them, they carry out the assessment after 1 session or maybe 2 sessions of psychotherapy and see कि कितना उनमें डिफरेंस आया है. तो अगर जो पहले वाले से कम स्कोर आया है, तो दैट मीन्स द पेशेंट हैज शोन इम्प्रूवमेंट. अब वो सब स्केल में भी जाएंगे, वो सब स्केल में देखेंगे कि पर्टिकुलर उसमें लास्ट वाले उसमें जो उन्होंने ये स्कोर किया था, असेस किया था, उसमें 5 पॉइंट्स थे, वहां भी अब भी 5 पॉइंट्स आ रहे हैं. तो दे modify their psychotherapy accordingly on give more emphasis on this. That's number 1. Number 2, what they do is
the psychotherapy, that is cognitive behavioral therapy, CBT, what is known as, in short. तो वो उससे वो ट्राई करते हैं कि पेशेंट should be able to or be made to learn to cope with the deficiencies, whatever the shortcomings they have. Say, for example, a person has hallucinations. So with the help of psychotherapy, they try to convince the patient कि look, ये सब तो it's a figment of imagination. आप इसको भूल जाइए. Don't pay attention to this. तो यही बात को रिपीट करते रहेंगे तो करते रहेंगे, the patient will be able to improve. He will start ignoring all these hallucinations and delusions. So ये तो साइकोथेरेपिस्ट का वे ऑफ ट्रीटिंग है. अब हम आ जाते हैं साइकेट्रिस्ट पे. वो दवाइयों से करते हैं. So they believe more on pharmacotherapy. So they use medicines. Whereas, as I said, dopamine inhibitory drugs, anti-dopamine drugs, okay, and serotonin के receptors को blockers होता है, what is known as serotonin blockers. तो ये दो टाइप की मेडिसिन हैं जो मेनली ये यूज करते हैं. और भी कुछ हैं, but I'm giving you the main drugs which are being used by the psychiatrists. डॉक्टर साहब, समस्या ये है कि ये मेंटल इलनेस का जो शब्द है वो हाँ जी. डिस्टर्बिंग है, और जनरली पब्लिक या जो पेशेंट या पेशेंट के रिलेशंस या फ्रेंड्स इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. मैं आपसे के माध्यम से ही जानना चाहता हूँ कि वैसे तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे सिजोफ्रेनिया के हैं, आईक्यू वाइज, इंटेलिजेंस वाइज तो इनमें कोई कमी होती नहीं है. और जी. अगर या फैमिली मेंबर ऐसे पेशेंट्स को किसी तरह ले भी आया तो वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो समझ रहा होता है यार, ये तो मुझे एक तो बदनामी वाली जगह में भेजा जा रहा है, और ये लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं भी इनका गुरु हूँ. तो मैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें एक तो बदनाम किया जा रहा है, डॉक्टर के पास क्यों जाएं. दूसरा, वो ये सोचते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी. इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे कि कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनना चाहिए कि इस तरह की भावना कि मेंटल डिसऑर्डर एक गाली सी लगती है और मेंटल डॉक्टर हाँ के जी. लिए एक शर्म की बात लगती है, इससे कैसे उबरा जाए. देखिए जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं ये एक सोशल टैबू है. अब जिसको कि हर लेमन यही बोलेगा कि भाई ये तो पागल आदमी है, जिसकी वजह से बहुत एम्बैरसमेंट होता है, फैमिली मेंबर्स को एम्बैरसमेंट होता है, वो छुपाते हैं इस बात को. तो इसी के लिए ही हम चाहते हैं कि जितना भी अवेयरनेस स्प्रेड कर सके, जितना भी मीडिया है, मीडिया के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू, कि भाई ये कोई टेबू नहीं है. जैसे कि बॉडी में दूसरी कोई डिजीज होती है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को स्टमक की डिजीज है, ठीक इसी तरीके से ये ब्रेन की डिजीज है. जब हमें कोई टेबू नहीं है कि हमें हार्ट डिजीज है या कोई दूसरी डिजीज है, तो व्हाई शुड वी हैव दिस टेबू कि ये तो वो पागल खाने का है, पागल वो इंसान हो गया. ये पागल नहीं हुआ है, दिस इज ओनली अ डिजीज. और जो सिम्टम्स हैं ये तो, अब आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी पेशेंट का जो रिलेटिव है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है. वो हमेशा यही कहेगा कि मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है. क्योंकि जैसे ही वो साइकेट्रिस्ट का नाम बोलेगा, उसको लगेगा कि भाई फौरन किसी के दिमाग में ख्याल आएगा कि ये तो इसका कोई रिलेटिव है जो पागल है. अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो कि ये टेंडेंसी जो है हमारी बदलनी चाहिए. तो इसके लिए तो और हम कुछ नहीं कर सकते. और पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए. देखिए, उनका जो भी इतना क्लोज नियर एंड डियर वन है, ही इज पासिंग थ्रू हेल. उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है.
तो वो कहते हैं ना कि अपने किसी लोगों को जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग जो रिलेटिव्स हैं। तो क्या ये छोटी सी चीज के लिए कि ये इंश्योर करने के लिए कि भाई हमारा ये जो नियर एंड डियर वन है ये ठीक हो जाए, तो दे विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस शेल ऑफ और टेबू कि नहीं, चाहे कुछ भी बदनामी होगी, लोग कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तो दे शुड कम आउट and visit the psychiatrist along with the patient. Patient को तो नहीं पता कि किसके पास लेकर आए। He is totally disorganized. He doesn't know anything. तो जब वहां पे लेकर जाएं तो वो they should be frank enough to tell them कि look this is what is happening. अगर हम होते हैं, हमारे पास कोई पेशेंट आया कि मेरे पास कोई ये सिम्टम्स हो रहे हैं, 1 महीने से बुखार चल रहा है, 1 महीने से डायरिया चल रहा है, मेरा वेट लॉस हो गया है, तो द मोमेंट वी आस्क हिम कि भाई तुम्हें किसी से तुमने सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी आउटसाइडर से किया, वो कहेगा नहीं। कि देखो भाई हम डॉक्टरों के बीच में ये हमारी कॉन्फिडेंशियल है कि जो कि दूसरी को नहीं पता चलेगा। आप तो बताओ, हमें नहीं, हमें भी तुम कन्फाइड नहीं करोगे तो किसमें करोगे? सो आफ्टर लॉट ऑफ परसुएशन ही कम्स आउट एंड कन्फेसेस यस ही हैज हैड an illicit relation with a prostitute or XYZ. Then we say, okay, fine, your features, your symptoms are suggestive of HIV, please get your this one done. और ये तो टोटल कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी के ये जो रिपोर्ट होती है, दिस इज नॉट रिवील टू एनीवन, इट विल बी नोन ओनली टू योरसेल्फ। तो वो करा लेता है, उसको पता चलता है, तो उसकी दवाइयां भी शुरू हो जाती है। बट ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट द पर्सन इज ऑन ट्रीटमेंट, ये सब कॉन्फिडेंशियल है। डॉक्टर साहब, मेरा मानना तो है वैसे तो हाँ दुनिया में हर दूसरा आदमी तीसरे को पागल कह देता है, एक कॉमन हाँ वर्ड। जी और मेरी सोच ये है कि ये हमें पागल शब्द ही डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा, पागल खाना वर्ड भी हटाना पड़ेगा। हम तो इसको स्ट्रेस कहेंगे, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है। और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर हम इसकी मार्केटिंग करें तो मेरे ख्याल से ये हाँ संभव। जी और हर गुस्से वाले को अगर, क्योंकि वो स्ट्रेस में होता है तभी वो गुस्सा होता है। और मुझे लगता है लव, केयर, अफेक्शन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे आप अपने नियर एंड डियर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ज़्यादा बीमार जी होगा तो आएगा ही नहीं आपके पास। जो कम बीमार होगा वो ये समझ लेगा कि मुझे यहाँ ले जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं आएगा। समस्याएं विकट हैं, इसके बारे में हमें कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे कि जिस तरह से हमारे पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह से अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या हमें कोई किसी तरह की स्ट्रेस है तो वी शुड गो। I would request all the participants and the viewers to kindly click on the like button, share it with their friends, and most importantly, they should subscribe to this genuine channel and a very reputed channel as much as possible. Thank you very much.